आवाज की दुनिया के दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, and a very good morning to all the wonderful listeners of Radio Azad, Voice of the People. मैं हूं आपकी मेजबान रूज सईद, रहूंगी आपके साथ सुबह सवेरे 8 से 10 बजे तक. प्रोग्राम है उड़न खटोला. You're listening to us on radioazad.us, shoutcast.com, itunes.com, और न जाने कहाँ. Lots and lots of other websites that you can actually listen to us also. All you have to do is search for Radio Azad. As well as on your smartphones, iPhones हों या फिर हों जी आपके Android phones, Googles, Blackberries, all of those phones you can actually listen to us through the TuneIn Radio app. हमारी अपनी ऐप भी मौजूद है on the iPhone as well as the High Def Radio app. So search for the app, Radio Azad की ऐप on iPhones या फिर TuneIn Radio की ऐप on your other devices. Or after that, you have to search for Radio Azad. Listen to us wherever you are in the world. हमारे स्टूडियो का नंबर है 972-501-9390, 972-501-9390. इस वक्त मौसम का हाल कुछ यूं है कि it is 62 degrees Fahrenheit as we speak. आज expected a high of 79 है, partly cloudy मौसम, and a lo and behold, of 38 degrees this evening. जी हाँ जनाबे वाला, आज होगी सर्दी, thunderstorms as well, 20% chance of precipitation. बारिश के इम्कान और सर्दी एक साथ. ये है आज का मौसम. Tomorrow predicted high of 61 degrees Fahrenheit with a low in the upper 40s, mid 40s rather. और ये था जी आपके मौसम का हाल. और झटपट आपको बताएं हम ट्रैफिक का हाल भी. In Dallas, accident on 635 LBJ freeway eastbound at Hillcrest Road. Fort Worth में accident हुआ है, left lane blocked on I-35 west northbound at Highway 287. Another accident in Dallas, 2 lanes blocked on I-35 east northbound at Marsalis Avenue. An accident in Dallas blocks right lane on I-35 east northbound before Daniel Dale Road. Garland में accident हुआ है, which has been cleared on I-30 westbound at Rose Hill Road. Another incident in Dallas, cleared on 75 Central Expressway southbound at Mid Park Road. Louisville में भी accident हुआ है, cleared on I-35 east southbound at Lake Louisville Bridge. In Grand Prairie, there has been an accident which has been cleared on I-30 eastbound after Highway 161. Yes, 161 भी, but for the most part, I-35 and 635 look very, very bad, both directions. So please be very, very careful out there today on the roads. तो ये था जी आपकी ट्रैफिक एंड मौसम का हाल together right here on Radio Azad, Voice of the People. और आज जनाबे वाला we are going to get a very very early start in our show. जैसे ही आए वैसे ही आ धमके और हम शुरुआत करेंगे अपने शो की. लेकिन इससे पहले आपको हम बता दें that this part of the program has been brought to you by Milani Jewelers. Milani Jewelers, carrying the largest variety of 22 karat gold, diamond and gemstone jewelry in North America, also selling 18 karat gold jewelry. बहुत ही ज़बरदस्त इनकी कस्टमर सर्विस होती है, तो दाम भी मुनासिब होंगे. बिल्कुल मुनासिब हैं जी, because when you mention Radio Azad, you are going to get some very special offers and good prices. Located हैं ये Richardson में at 318 South Central Expressway. And इनका नंबर 972-234-GOLD, 972-234-4653. Or you can also visit them at malanijewelers.com, MALANI jewelers.com. जनाबी वाला, आज आपको हम बता दें कि क्या हम बात करने जा रहे हैं. वेडनेसडे के दिन होता है हमारा हेल्थ एंड ब्यूटी कॉर्नर, जिसमें कि हम आपके लिए पेश करते हैं
मोस्टली ऑल्टरनेटिव मेडिसिन रेमेडीज़, घर के टोटके हों या फिर कोई ऐसी बात हो जो कि रेगुलर मेडिसिन से हटके हो, यानी कि कन्वेंशनल मेडिसिन से हटके हो। रुझान हमारा होता है ज़्यादातर ऑल्टरनेटिव मेडिसिन की तरफ। और as promised yesterday, we are going to be talking about some alternative methods to cure with respect to cancer. चलिए जी, परहेज करते हैं क्योर एंड ट्रीटमेंट के लफ्ज़ इस्तेमाल करने से। Yes, we're going to be talking about the second leading cause of death in the world, cancer, today. बात हम करेंगे डॉक्टर साहब से, डॉक्टर अहमद से, जो कि होंगे यहाँ पर कुछ ही देर में ऑन द एयर विद अस. We'll ask him about cancer, the causes of cancer, risks and benefits of chemotherapy, जो कि conventional medicine में इस्तेमाल होती है, and some alternative methods used for cancer as well. हमारे स्टूडियो का नंबर है 9725019390, जो कि आपको हम बता दें, आपकी हम कॉल्स लेंगे आफ्टर 9 o'clock. उस वक्त तक हम बात करेंगे डॉक्टर अहमद से, जो कि होंगे कुछ ही देर में हमारे साथ ऑन द एयर. स्टे ट्यून्ड राइट हियर बिकॉज ही विल बी ऑन द एयर विद अस वेरी वेरी सून. Ladies and gentlemen, you are listening to Radio Azad, Voice of the People. हमारे साथ हैं डॉक्टर सैयद अहमद, जो कि डॉक्टर ऑफ ओरिएंटल मेडिसिन है, and he is licensed to practice acupuncture and Chinese herbal medicine since the year 2003. Also received some special training as an NAET allergy specialist in California as well as in homeopathy. और इनकी allergy treatments, आपको हम बता दें, have been featured on WFAA Channel 8 News. And he has also worked in the physical therapy department at Presbyterian Hospital right here in Dallas. And clinic director hain of Green Crescent Herbs and Acupuncture Clinic in Richardson for the last 8 years, and uses a variety of natural techniques to help people with many types of health disorders. आज हमारे साथ हैं on the air, लेते हैं उनको and बात करते हैं उनसे about cancer. डॉक्टर साहब, अस्सलाम वालेकुम. जी, अस्सलाम वालेकुम. कैसे हैं सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल खैरियत से. आप कैसे हैं? जी, अल्हम्दुलिल्लाह. Just a hectic morning as usual. I know, and this is a hectic time. First of all, बहुत बहुत शुक्रिया आपका that you spared some time for our listeners on this extremely busy Wednesday midweek. I'm sure it's very busy for you, but thank you very much for being with us this morning, sir. No problem. Glad to be here. ग्रेट. डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइए, डॉक्टर अहमद, आज हम बात करने जा रहे हैं अबाउट कैंसर. तो आपसे हम पूछना चाहेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल टू बिगिन विद, अगर आप हमें कुछ लेमन टर्म्स में, आसान टर्म्स में बता सकें, व्हाट एग्जैक्टली इज कैंसर? Yeah, and really the simplest of terms, it basically refers to abnormal cells that divide uncontrollably and invade other tissues. So just to give you background, normally, cells are produced, they have a certain lifespan, and then they die off. And that's basically normal. And in your body, you have literally trillions of different cells. In this particular case, the process that relates to replicating and division gets out of control. So you may have also heard of a related term called a tumor. Mm-hmm. And a tumor also refers to abnormal tissue growth,
but there are two types of tumors. One is called benign and one is called malignant. To distinguish them, benign tumors are basically not cancerous, and they usually do not pose a major health risk, and they don't even grow back if you remove them, but they still involve certain abnormal replication. In the case of a malignant tumor, that is actually cancerous, and they can invade other tissues, and they can obviously pose, very serious health problems, including death. So that is basically what it involves. Mm-hmm. In a nutshell, that's what cancer is about. Dr. Ahmed, मुझे ये बताइए, what causes cancer? Are there any known causes of cancer? Yeah, that's the multi-billion-dollar question, right? Yeah. That's right. So, obviously, I'm sure our listeners know that for many decades there's been research in this area, and many things are known, but certain detailed aspects of it are still unknown, believe it or not. But it's basically known that it's a complex combination of many factors. There are genetic factors, there are environmental factors, there are factors that relate to toxicity, there are factors that relate to diet and lifestyle. For example, several years ago, the Harvard University School of Health did some detailed research in this area, and they found, for example, that poor diet and obesity alone account for at least 30% of cancers. Similarly, they also found, interestingly enough, that if you combine, poor diet, poor lifestyle choices like smoking or alcohol or lack of exercise, if you account for all those factors, it can account for basically 65% of cancers. Then when you add in the fact that we're exposed to so many different types of toxins in the modern world, we know that there are many what we call carcinogens, and carcinogens refers to cancer-causing agents. And basically we've all heard of pesticides, herbicides, residues of that get into our food system. You may have heard about asbestos in various homes. Formaldehyde is another chemical that exists in the particle boards in our walls, believe it or not. It's also found in various types of detergents and cleaners, perfumes and paints. You may remember from chemistry class that formaldehyde was, or biology, used to preserve like dead body parts. Okay. So that is another example of one. Aluminum in high amounts is a carcinogen. There are certain petroleum and coal byproducts that we can sometimes inhale through the atmosphere that are known carcinogens. Okay. One other quick example comes to mind. Believe it or not, there's even research that fluoride, which is found in toothpaste, some studies indicate that even that is a carcinogen. Some say it isn't. But the bottom line is there are many different types of risk factors we're exposed to. And another, just to close on that question too, another important fact that our listeners should know, and many of us are not aware of this, is cancerous cells are produced, and this is a fact, on a daily basis in most healthy individuals. And sometimes that's hard for people to believe, but the fact is that, as I said earlier, there are trillions of cells in your body. Some say anywhere from 30 to 60 trillion cells. So there are mutations in several of these cells, and even if there are mutations in 10 to 100 cells, that's still a start, right? And the good news, though, is in a healthy individual, the immune system deals with that immediately and very easily. And so, for years and decades, you never even have an issue. But the point is, at some point, we can reach an age where, due to other diseases, or as we talked about, toxic exposure, certain poor lifestyle choices, whatever it may be, our immune system gets compromised and has a difficult time dealing, with that replication and controlling it. And so you end up, with these type of cancerous issues. So it really begins with the immune system, is what you're saying? Absolutely. Okay. Critical. All right. And those are some of the known causes of cancer. अब डॉक्टर साहब आते हैं conventional medicine की तरफ, which is used to cure cancer, which is chemotherapy. कुछ उसके benefits और risks बताएंगे हमारे listeners को? जी, just to keep it again pretty basic, chemotherapy refers to the
use of chemical synthetic drugs that interfere with the replication process of cells. Their benefits are obviously that they kill cancerous cells relatively quickly. And so if you have cancer that's, spreading quickly or in a particular organ system or spreading to other tissues, then it can control it relatively quickly. The biggest issue with it is that it also kills, normal cells, and there's a great deal of difficulty in trying to distinguish between the normal cells and cancer cells with most chemotherapy agents. And so because of that, the most common side effects that people are sometimes aware of are, number one, anemia, which is like related to low blood counts, and that causes low energy and fatigue. Mm-hmm. There are low white blood cell counts, and our listeners may know that white blood cells are very critical for our immune system, so our immunity gets weakened. Mm-hmm. People may have heard about hair loss and nausea. Mm-hmm. Diarrhea is also pretty common, skin rashes, sometimes even muscle problems, sometimes nerve pain, sometimes even sexual side effects. So there's a whole host of risks as well. Can chemotherapy also eventually be a cause of death as well, Dr. Saab? Believe it or not, it can, and that's admitted by the medical community too, meaning sometimes if you cross a certain threshold or border where your immunity itself becomes so weakened, it's pretty well known medically that many cancerous patients sometimes die of other diseases, meaning they get a severe infection like a pneumonia or some other disorder, and they can pass away due to that. So yes, it can actually. और उस पे मैं थोड़ा सा और आपसे जानना चाहूँगी. मुझे ये बताइए कि me obviously not being a doctor, not aware of this, कि क्या ऐसी सूरत हो सकती है कि इस तरह का कैंसर हो, कोई ऐसी स्टेज में हो जो कि आप उसको बिल्कुल छोड़ दें अकेला. तो and I have actually heard cases like this, कि leaving that cancer alone and not treating it with chemotherapy actually led the person to lead a longer life, rather than in cases of chemotherapy there has sometimes been an acceleration of death. Is that true? Does that have any weight? जी बिल्कुल सही है, and in fact this is being admitted by the medical community. Some of your listeners may know it's been quite a hot topic in the news and recently, and even in these last few years. But even as recent as just a few weeks ago, there was a huge study, and the results of it came out where a commission issued their findings, and they basically found, as an example, for prostate cancer, there is actually a treatment that, believe it or not, they call it watch and wait, in layman's terms, where they're admitting that sometimes they are overly aggressive in treating certain types of cancer with chemotherapy and radiation. And there are certain cases, admittedly not all, but certain cases where they say it's better to leave it as it is because the cancer is not likely to spread. In some cases, again, prostate is one of them, and it obviously depends on other factors as well. But sometimes if you leave it, you have a much better chance of survival and a much better chance of not having certain side effects. They're even finding that, believe it or not, with certain cases of breast cancer and even otherwise. But again, that gets back to the complex nature of cancer and how sometimes it can spread uncontrollably to other tissues. Other times it can spread and become a tumor, but not necessarily cause certain symptoms or severe issues. Mm-hmm. Yeah. ठीक है, ये तो हुई कीमोथेरेपी. हाउ अबाउट रेडिएशन, जो कि ऑल्सो इस्तेमाल होती है फॉर ट्रीटिंग कैंसर? जी बिल्कुल. रेडिएशन भी एक दूसरी टेक्निक है जो कि बेसिकली इन्वॉल्व करता है द ट्रांसमिशन ऑफ electromagnetic beams or electromagnetic waves with specific frequencies to target, the killing of cancerous cells. And here too, the advantage is that many times it can be relatively quickly in controlling and killing cancerous cells. And they've improved the technology in the last several years
so that radiation beams are much more focused than they were in the past. But as you might guess, when you use radiation beams, some of that radiation beam is going to be targeted towards some of your normal cells as well. As I said, they've improved the efficiency, but some of your normal cells are killed as well. And that's why, once again, you can have certain side effects, especially on the skin in the area where the beams are applied. Many times people will get something that looks like a sunburn. It'll be like red and warm, discolored skin. But then it can also still lead to certain other side effects like fatigue, loss of appetite, and again, weakened immunity. ओके ये सारे जो हैं वो साइड इफेक्ट्स हैं रेडिएशन के राइट सो पर्सन दैट इज सफरिंग फ्रॉम कैंसर ऑब्वियसली हैज टू असेस ऑल ऑफ दीज एज वेल बिफोर टेकिंग दैट राउट ऑफ कन्वेंशनल मेडिसिन ईदर ऑफ कीमोथेरेपी या फिर रेडिएशन ये सब उनको मालूमात होनी चाहिए डॉक्टर साहब मुझे ये बताइए सर्जिकल रिमूवल ऑफ एन ऑर्गन और ट्यूमर कैन दैट समटाइम्स क्योर कैंसर I'm sure all of us probably have heard of some cases of, for example, colon cancer, or you may know people who have breast cancer or prostate cancer, and sometimes they will recommend, removal of the organ itself. And in some cases, it can, go into a complete state of remission or cure, but the vast majority of time, you do still have a high rate of recurrence, again, depending on the details of the particular cancer. But it would make sense to you that if there are certain causes that led to the formation of the cancer in the first place, just removing an organ, doesn't fix those causes. So this is a thing, we often convey to patients is sometimes they think, well, if I have cancer growing in my colon, why don't we just cut that part out? And I'll be fine. But are you really addressing why you have that in the first place? Because it could easily come back. So that is really the important thing, to keep in mind. Even if the cancer has not spread to the other organs, removing it completely might not be a solution, you're saying? That's right. And the reason is, cancer can starts with one cell, right? And so even if you remove a whole organ, it doesn't necessarily mean that you have removed 100% of every single cancer cell. It's almost like when there's an analogy of like a tree, and you cut a tree, there's still a stump or there are the roots underneath, which you may not have got to, right? And so it's like a nasty weed that just keeps coming out. Okay. It's important for patients to still remember that. And it's this is actually pretty common in that especially breast cancer जो कि बहुत common है देखा जाता है कि they remove one breast लेकिन the cancer still remains. They remove the other one, the cancer still remains. That's right. And बिल्कुल सही बात. जी तो you're saying that is not completely all encompassing या comprehensive cure नहीं होता कैंसर का. ठीक है अब डॉक्टर साहब आते हैं आपके और हमारे फेवरेट सब्जेक्ट की तरफ ऑल्टरनेटिव मेथड्स फॉर यूजिंग टू क्योर एनी डिजीज एंड स्पेसिफिकली आज जो है हम बात करेंगे कैंसर की कैन यू सजेस्ट सम वेज दैट हैव बीन यूज्ड जी ये भी जो है बहुत ही controversial vast subject है जी yeah and it's somewhat controversial. There are many laws that govern this particular practice in the US as well, but basically I can tell you there are many different types of techniques. There aren't just one or two types of techniques in alternative medicine, but as a start or as an example, there's a doctor in Houston who has become famous across the world and has patients attend him from across the globe, and for several decades he's been using a technique that's considered what we call a biologic agent, but it's a non-toxic agent. He uses something called anti-neoplastons that are small chains of amino acid peptides, and without getting into complicated scientific terms, the bottom line is he has been using that technique, which is different from the mainstream technique, and he's a medical doctor.
and he has been using them successfully for decades, especially for certain types of cancer. But at the same time, the FDA tried to actually stop this particular treatment. Fortunately, they lost in several court cases, and his treatment continues. But this is just one example. Other examples are there. Just like there's radiation, there are other types of treatments that are physical methods that involve various types of energetic treatments or energetic frequencies or beams or forms of electricity that are sometimes used in alternative medicine. There are also several techniques that relate to detoxification. Earlier we were talking about the role that toxins play in contributing to what we call free radical damage and altering the normal state of cells. And so there are many types of cleanses. Some of our listeners may have heard of colon cleanses or liver cleanses, kidney cleanses, or whole body cleanses. These are also certain techniques that are used. And then there's probably the biggest area relates to herbal and nutritional remedies and certain dietary changes, certain lifestyle changes that all relate to strengthening your immunity. Right? Earlier we talked about the critical role that your immune system plays in controlling cancerous cells. And fortunately, all of the things we've been taught over the years that relate to a good lifestyle, good diet, exercising, and then incorporating certain natural foods, natural herbs, plants. This is another very vast area that can also help. ठीक है. What about, we were talking about, the alternative methods. तो आप बात कर रहे थे, लेकिन earlier on you had mentioned something about diet and lifestyle with respect to cancer. And जैसे कि आपने अभी mentioned किया, strengthening the immunity. How important is really diet and lifestyle with respect to cancer? We really can't estimate or emphasize it enough. Earlier I was mentioning that study from Harvard that said approximately 65% of cancer is basically related to poor diet and lifestyle decisions. And so when it comes to diet, I mean, there's pretty good consensus, even from the American Cancer Society and most research groups, that you can summarize some of the dietary recommendations by saying that if you minimize, your consumption of certain what we call simple carbohydrates, meaning too much sugars, certain red meats, certain fried oils or fats. This is one important step. And secondly, increasing your consumption of vegetables, fruits, whole grains, things that God made, right? Right. And minimizing the level of all these chemicals and processed foods. This is, there's really overwhelming research on that. And then, obviously, when it comes to exercise and, making good decisions like avoiding not just smoking, but, another common misconception we see among the population here is they think that, having some level of alcohol consumption is good. But when you really look at the numbers, you see that, especially with respect to cancer, it's a huge risk factor. Okay. And, some of the research that came out regarding wine is also misleading because doctors have admitted that the benefits in wine come from the benefits of certain substances found naturally in the skins of dark-colored grapes. And you can imagine how the wine industry jumped on that to try to, sell more product. But the fact is, even by drinking certain grape juices or taking certain supplements that have concentrated these substances, you can get that benefit without necessarily having to take, alcohol. But anyway, bottom line is, there are many different things you can do with your diet and lifestyle to minimize your risk. And let me repeat what you said, Dr. Saab. 60% you said of cancers can be, 60% of the chances of developing cancer can come from unhealthy choices in diet and lifestyle? Ji, bilkul. Ji, okay. This is, and like I said, there's overwhelming research on this, if any of the
listeners want to know, they can contact me and I can provide that. Yeah. Okay. कुछ common foods बताएंगे that can help prevent cancer possibly? जी बिल्कुल. इसमें भी काफी research हो चुकी है and it's obviously still ongoing, but just to mention a few of the most well-researched areas, and some of our listeners may have heard of cruciferous vegetables. Cruciferous vegetables refer to a family of vegetables that includes broccoli, cauliflower, cabbage, kale. In fact, the research on that is so overwhelming that they say, especially for breast cancer, this is one of the best preventive. Believe it or not, there are studies that there are substances in these vegetables that are stronger than certain chemotherapy drugs if taken in the correct dosage and in the correct way, and obviously without any of those side effects. There's even a substance they isolated in these things called indole 3-carbinol, and it's a big fancy name. If any of our listeners want to Google that particular term, some people call it I3C. It's been isolated in these vegetables and is very effective. Other examples are in colored fruits and vegetables, things that have strong color like a yellow or orange or red. But berries in general have been researched to be preventive for several types of cancer. In the onion family, meaning garlic, onions, shallots, scallions, all of these have also been studied to be preventive against certain types. Tomatoes that we consume, pretty much daily, has in particular been found to help prevent prostate cancer. Okay. Our Desi listeners are very familiar with haldi, what we call turmeric, the spice. That too is another one that is overwhelmingly studied. In fact, nearby in our own state of Texas, in Houston, you may have heard of the famous cancer center called MD Anderson. They have been doing research on turmeric for several years, and they also found that it's particularly helpful for preventing breast cancer as well as some other types as well. And then just to mention just another couple quick ones that come to mind, green tea, almonds, pomegranates. So thankfully, God has blessed us with many different things that are helpful not only in preventing cancer but maintaining, our health in general. Okay, so आप कह रहे हैं कि things like green tea and almonds and things with high antioxidants, फिर green vegetables जो हैं या फिर dark colored vegetables, these actually green vegetables का आपने mention किया, cauliflower, cabbage and kale जैसे vegetables जो हैं, they can actually sometimes be stronger than chemotherapy drugs, you said. Not all of them, in certain instances. Like I said, in particular, the ones that are found in those cruciferous vegetables, I did come across a study that compared the substance they're finding in that called indole 3-carbinol, which again is found in this family of broccoli, cauliflower, and cabbage. They studied that in high doses versus certain chemotherapy agents, including some of our listeners may have heard of tamoxifen, which is found or often used for breast cancer treatment. In certain cases, they did find it was more effective than that. Okay. And again, I do have the studies that back that up. Right. And of course, turmeric, haldi jo hai, I've been reading a lot about that also. Overwhelmingly, people are turning to that, and a lot of research, people can actually go and find that on the internet on haldi and how it can actually help prevent cancer. डॉक्टर साहब कोई herbs भी होते हैं that have been researched, actual research है to help prevent cancer? जी बिल्कुल है. This is another huge area of research. Mushrooms, are kind of in both plant and food family because some mushrooms are edible, some are not edible. But there are certain mushrooms that again have been very well researched, especially in Japan and China where they're heavily consumed. You may have heard of mushrooms like maitake or shiitake. There are another couple called reishi and ganoderma. They're not consumed in the U.S. as much as in the Far East, but they are available now here as well. There are a number of companies that are selling
standardized potent extracts from the mushrooms as well. There's things like you may have heard of called noni or barley grass, which is like the grass that is associated with barley or wheat. There's what we call olive leaf extract. There are certain herbs called cat's claw, astragalus, milk thistle. There are things called spirulina, chlorella that sell in health food stores. And then there's a whole host of Chinese herbs that have been found to be anti-cancerous. You may know that in China they have a more integrated system of healthcare where they do heavy research in natural techniques as well, including the use of their traditional herbs. So there's a number of Chinese herbs also that have been found to be helpful for preventing cancer. Okay. So lots and lots of herbs also available out there that can help prevent cancer. What are some other steps, Dr. Ahmed, that people can take to minimize their risk for cancer? Gee. So there are kind of several areas. I think some of it relates to diet, as we were just talking about. Some of them relate to other steps outside of diet. But getting first back to diet, we talked about eating as natural and organic as possible. Another related factor there is basically minimizing or doing whatever you can to control your weight, because as an example, there's another disease that's so common, which is diabetes, that we've all heard of. That alone increases your risk factor for cancer, where it turns out that if your body is producing too much insulin and your blood sugar stays high, cancerous cells love that and they thrive on sugar. Right? Okay. So this is yet another factor that we often remind our patients about, is keeping the weight under control and blood sugar. We talked about avoiding smoking, alcohol, certain foods. But even outside of the food area, there's research, for example, that you should minimize the use of plastics. Okay. Plastics have several toxic compounds that interfere with your hormones. Some of them can even be cancerous. There's overwhelming research that if you microwave plastic containers, and it basically causes certain compounds to leach out of the plastic and into the food. And there are definite carcinogens there. So I would strongly recommend our patients to use glass or ceramic if you have to microwave. There are chemicals, synthetic chemicals, unfortunately, in many, many things we use commonly, like women often use cosmetics, their perfumes, their detergents. Try to go as natural as possible with these things. I know it's difficult for many people, but and many times they don't realize what they're doing. But even things you apply on your skin do get absorbed, right? Okay. So whether that's a cosmetic or a lotion, just as an example, I would urge our listeners next time they buy a lotion or a cream to just read the label. Right? Okay. And you'll see probably at least 20 compounds that you have never heard of. And many of them are not only implicated in possibly causing cancer, but also other health issues. So many people have hormonal problems and much more. So this is yet another step. We should at least try to minimize some of the use of these things. Okay. And yet another step comes to mind, too, is water. Okay. Our bodies are 70 to 80% water, and so the type of water that we use is absolutely critical, too. And while, some people consider it safe to take tap water, many other experts believe that it is safer to not use tap water. Okay. Tap water still contains, residues of chlorine and certain heavy metals like lead, where the government allows certain amounts of these things in it. And so if you can drink a highly purified, source of water, that would also be better for you. So these are just, a few examples that come to mind. Just a few, and yes, so interesting to know. So these are all things that one can do. Of course, water अपना purified पिए, microwave में जब आप चीज करें, first of all, microwave इस्तेमाल कम से कम करें और ना करें तो बेहतर है. लेकिन प्लास्टिक जो है वो इस्तेमाल ना करें. That's a big one, right?
Yeah, and it's almost impossible to do it on a practical level. You can minimize it, but as an example, I grew up in this country, and when I was younger, there were very few products that were in plastic. But now, when you think about just go to the grocery store, you'll see that, mayonnaise, ketchup, drinks like water, sodas, everything is in plastic, right? And so, it is difficult, but you can at least try. और ये जो पानी की बोतलें जो कि गाड़ी में छोड़ देते हैं लोग और गर्मी की वजह से वो पिघल जाती हैं, वो पानी आके जब आप पीते हैं, how harmful is that? That is true, and they've done research on that too. That the more you heat up, plastic components, the more it starts to leach, certain compounds from the plastic into the food or liquid. And obviously, that gets much more compounded when you microwave something. But even you're correct in saying that, even if you just leave it in your car and it's a very hot day, and if you leave that for hours or sometimes days, I mean, I know people who leave them in that for days, it does increase your risk factor. Right. And that is something very, very common. That's something that we probably, all of us are guilty of doing. That's why I wanted to hit upon that. And plastic usage, especially in the US, is very, very high. So that is one thing that you think we should prevent ourselves from doing in order so that we can minimize our risk of cancer. राइट बहुत बहुत डॉक्टर साहब आपका शुक्रिया, आपने इतना टाइम निकाला हमारे लिसनर्स के लिए. जाते जाते इज देयर एनी वन की थिंग दैट यू वुड लाइक टू पॉइंट आउट, एंड if there's one thing, like initially you had mentioned immune system, कि it all starts from the immune system, तो इस तरह की कोई आप बताना चाहेंगे लिसनर्स को कि प्रिवेंट करना कैंसर, एंड देन फिर मतलब एक दफ़ा हो जाए तो रियल क्विक अगर आप दोबारा बता दें कि क्या हो सकते हैं अल्टरनेटिव मेथड्स, नॉट क्यूर्स एंड ट्रीटमेंट्स, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट, वी आर टॉकिंग अबाउट मेथड्स. तो व्हाट पॉसिबली कैन वन पर्सन हु इज ऑलरेडी सफरिंग फ्रॉम कैंसर, what can they do? जी. So getting back to your first part, definitely, we're trying to emphasize that having a healthy and vital and strong immune system is critical, not only to preventing cancer, but to health in general, right? So all the things we talked about as far as, minimizing your weight, making good decisions with respect to daily exercise, the right foods, all of that cannot be, emphasized enough. And so that is one part of it. And then the second part you asked about, what was it again? You said... alternative methods. Yes. Yes. I mean, the alternative methods, I mean, we're not, trying to mislead our listeners here and saying that you can just, if you have some severe form of cancer, just go and, leave everything and just drink some green tea. Right. It means basically that you should try to do your own research. You should try to consider different options, discuss them with your doctor. You really need to do, and I would encourage all of our listeners to do a lot of reading in this area, because even when you go to your medical doctors or oncologists, they don't have time to, discuss all these different options with you, right? And so you basically have to do your own homework. There are many options out there, and it's not necessarily a simple black and white decision where I have to do X or Y. There are things you can do that we just talked about that can be done, concurrently or simultaneously with, conventional methods. We have many patients who have done chemotherapy and radiation, and they want to do certain natural techniques to help, prevent things in the future or prevent recurrence. There are certain things that can be done simultaneously. So again, like I said, it's a vast subject, but I would encourage our listeners to really research this area and look for
viable option. Right, and matlab, something that we wanted to establish here also is if it's not hopeless. It's not a hopeless situation. Once you have cancer, there are people that live for years and years and live well. They live, healthy lives. जी. बिल्कुल सही बात है यार. तो एंड ऑफ कोर्स ये ऑल्टरनेटिव जो कि मेथड्स बताए डॉक्टर साहब ने आपने ये इनका कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होता, ये हार्मफुल नहीं होते हैं. और थिंग्स लाइक ज़ाहिर जब आपने मेंशन किया थिंग्स दैट स्ट्रेंथन योर इम्यून सिस्टम, ऑफ कोर्स यूजिंग दैट साथ साथ जो है वो उसमें आपको कोई नुकसान नहीं होगा. अगर फ़ायदा ना हो तो नुकसान कभी नहीं होगा. जी राइट. डॉक्टर अहमद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, एंड आपने अपना कीमती वक्त दिया रेडियो आज़ाद को. वी आर वेरी वेरी ग्रेटफुल सर. जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया. उम्मीद है कि लिसनर्स को कुछ फायदा हुआ आज प्रोग्राम से. मुझे तो बहुत जो है ना वो सुन के ही इफाका हो गया. और इंशाल्लाह जो है अब कोशिश रहेगी कि जो है ये एक हेल्थी लाइफस्टाइल जो है वो मेंटेन कर सकें, स्पेशली वेयर डाइट इज कंसर्न्ड. एंड थैंक यू सो मच फॉर दैट डॉक्टर अहमद. थैंक यू. शुक्रिया सर. थैंक यू. That was Dr. Sayyad Ahmed, जो कि क्लिनिक डायरेक्टर हैं ऑफ ग्रीन क्रेसेंट हर्ब्स एंड एक्यूपंक्चर क्लिनिक इन रिचर्डसन. और इनसे आपने सुनी कुछ नेचुरल टेक्निक्स टू हेल्प पीपल विद कैंसर, ऑल्टरनेटिव मेथड्स फॉर क्यूरिंग कैंसर. एक छोटी सी ब्रेक लेके आते हैं वापस आपके पास, और अब आप से भी सुनना चाहेंगे. वुड लाइक टू हियर फ्रॉम आवर लिसनर्स इफ देयर इज एनीबडी आउट देयर दैट वुड लाइक टू शेयर देयर स्टोरीज ऑफ हैविंग perhaps cancer themselves या फिर a loved one, and if an alternative method has helped you, we'd love to hear from you. And लेंगे आपकी कॉल्स हम ब्रेक के बाद. रेडियो आजाद, इट्स माय रेडियो, मेरा रेडियो, मेरा भी तो है. सोना हीरे मोती से वर, सुंदरता के सारे सपने देखे सोचे थे जो हमने, पूरे हुए हैं लम्हों में. मलानी ज्वेलर्स, 22 कैरेट सोना, डायमंड्स, जेमस्टोन्स ज्वेलरी आपकी खिदमत में. मलानी ज्वेलर्स, 318 South Central Expressway, Richardson, Texas. For details, call 972-234-4653 or visit www.malanijewelers.com. मम्मी, मुझे जायरो खाना है. कोई जरूरत नहीं है, हलाल जायरो कहीं नहीं मिलता. मिलता है, चिली पेपर में सब हलाल जब यहाँ मिलता है. All kinds of sandwiches, pizzas, burgers, chicken wings और डैलस की बेस्ट बिरयानी आपके लिए. लेकिन स्प्रिंग वैली और ग्रीनविल पर कौन जाएगा इतनी दूर? अरे माँ, अर्विंग में मिकासर और वैली ranch पर भी एक ब्रांच है जिसके साथ मीट शॉप भी है, ऑर्गेनिक और नेचुरल मीट, चिकन, लैम्ब, बीफ, गोट और स्टेक मीट के लिए. तो ये अर्विंग में फोन नंबर क्या आएगा? 972-444-8866 और रिचर्डसन में 972-480-8998. सुनिए जी, आते वक्त पेप्सी की 2 कार्टन लेते आइएगा क्रोगर से. अच्छा. और मिल्की वे की 4 डब्बे कॉस्को से होलसेल में सस्ते मिलेंगे. अच्छा. और शक्कर भी तो लानी है. देखिए 10 पाउंड का बैग लाइएगा सैम्स क्लब से. अरे बेगम, मुझे करो बेगम. सुई से लेकर दवाई तक और डैलस से लेकर हवाई तक हर चीज मिलती है A to Z होलसेल. So be desi and buy desi. A to Z Wholesale at your service in Waco and Dallas at Harry Hines. For more information, call 972-484-1153. And remember, be desi, buy desi.
Welcome back, ladies and gentlemen, listening to Radio Azad, Voice of the People. With your मेज़बान रूज सईद, प्रोग्राम है उड़न खटोला. हमारे स्टूडियो का नंबर है 9725019390 9725019390. इससे पहले कि हम आपको कोई और इन्फॉर्मेशन दें, यहाँ पर कॉलर हैं और मेरे ख्याल से चले गए. दोबारा कर लीजिए 9725019390 पर. Let me tell you about your Qurbani options before we say anything else. आपको हमने कल हज का शो किया. बहुत बहुत शुक्रिया आप सबकी अप्रिसिएशन का. Thank you so much for all the wonderful comments that we received on Facebook, on email, and बहुत बहुत शुक्रिया. कुर्बानी के लिए couple of options that we have for you. एक तो चिली पेपर कुर्बानी अरेंजमेंट्स करवा रहे हैं एंड दोज आर ऑथेंटिक. ऑफ कोर्स आपको पता है ज़बिया हलाल कुर्बानी होगी आपकी. यू कैन कैरी इट अंडर इंडिविजुअल नेम्स. इंफॉर्मेशन के लिए आप चिली पेपर के बिलाल साहब को कॉल कर सकते हैं. उनका नंबर 9728000039. सो 9728000039. दूसरा ऑप्शन आपका है ओबैट हेल्पर्स का एंड ईद अल अधा जस्ट अराउंड द कॉर्नर. Please go ahead and consider this option, sharing your good fortune with the unfortunate people that have been left behind in those Bangladeshi camps. Obat helpers भेजते आए हैं इनको पिछले 5 साल से गोश्त और आप कुर्बानी करवा सकते हैं. Obat helpers के साथ इनकी इन्फॉर्मेशन आपको obathelpers.org पर मिल जाएगी. OBAT helpers.org. You can also call 317-203-0603 for more information. 317-203-0603. साथ ही साथ आपको हम बता दें that this part of the program has been sponsored by one of our benefactors, हाफिज अमीर खान साहब. बहुत बहुत शुक्रिया आपका हाफिज साहब. आज हम बात करने जा रहे हैं about we were actually talking to Dr. Sayyad Ahmed, जो कि Green Crescent Herbs से हैं. He's the clinic director at Green Crescent Herbs and has been practicing methods, alternative methods for curing several diseases. आज हमने लिया उनका expert opinion, specially targeted on alternative methods used for cancer. कैंसर जो कि नंबर 2 लीडिंग कॉज ऑफ डेथ है इन द वर्ल्ड, द नंबर 1 बीइंग हार्ट डिजीज. और इसके बारे में हमने एक्सटेंसिवली बात की डॉक्टर अहमद से. एंड इफ़ यू हैव मिस्ड इट, देयर हैज़ एक्चुअली काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि आपने मिस की. तो हम रेकमेंड करेंगे कि द पीपल दैट यूजुअली जॉइन अस अ लिटिल बिट लेटर इन द प्रोग्राम वो इसका रिपीट सुन लें, बिकॉज देयर वाज अ वेल्थ ऑफ इंफॉर्मेशन दैट डॉक्टर साहब प्रोवाइडेड. एंड दिस प्रोग्राम इज गोइंग टू बी रिपीटेड एट 8 p.m. Central Standard Time tonight. इस वक्त हम लेना चाहेंगे आपकी कॉल्स और आप से पूछना चाहेंगे, लाइव एग्जांपल्स देना चाहेंगे. वी हैव दिस आवर दैट वी वुड लाइक टू टेक योर कॉल्स एंड एनकरेज पीपल दैट हैव ईदर सफर्ड फ्रॉम कैंसर देमसेल्व्स या फिर अ लव्ड वन दैट दे हैव सीन सफरिंग. अगर आप बताना चाहें कि कीमोथेरेपी से उनके क्या रिजल्ट्स थे या हो रहे हैं, और एनी लाइव एग्जांपल्स दैट यू वांट टू गिव फॉर कन्वेंशनल मेडिसिन एज वेल एज फॉर ऑल्टरनेटिव methods used, we would love to hear from you. It's going to be very, very helpful for everybody, for our listeners out there, because this is something very, very common. हम समझते हैं कि शायद ये चीज़ हमको नहीं हो सकती. Anything bad, nothing bad can actually happen to us. That's why we live in this bubble, this
world of delusion that nothing bad can ever touch us. But you know what? It's a possibility, absolutely a possibility for any one of us. जैसे कि डॉक्टर साहब को आपने सुना, he had specifically said that most people are carrying those cells for cancer that can develop into cancer क्यों या अगर आप कुछ preventative methods इस्तेमाल ना करें. और in detail उन्होंने बताया कुछ preventative methods. We'll go over what he had said, what we discussed earlier on also. But अभी लेते हैं आपकी कॉल्स. हमें 972-501-9390 पर. गुड मॉर्निंग. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. ज़िया साहब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह. बड़ा मालूमाती प्रोग्राम था और बड़ी मालूमात आई, लेकिन एक पहलू मेरा ख्याल है कि रह गया जो आपने नहीं पूछा जी और ना उन्होंने बताया. सबसे बड़ी जो चीज होती है विल पावर जी मरीज के अंदर, उसके ऊपर जरा रोशनी डालनी चाहिए थी. क्योंकि अगर विल पावर नहीं है तो कितना ही आप इलाज करा लें, कितना ही वो कर लें, तो वो आराम नहीं होता. तो जो एक साइकिल होता है कि मरीज, डॉक्टर और दवा, अगर इस साइकिल में कोई भी चीज काम नहीं कर रही तो दो चीजें उसमें से काम नहीं करेंगी. मसलन जैसे मरीज के अंदर विल नहीं है जीने की या वो मायूस हो गया है, तो ना ही डॉक्टर की एडवाइस या डॉक्टर की तशखीस काम करेगी, ना दवा काम करेगी. तो इस पे जरा थोड़ी और बात होनी चाहिए थी मेरे हिसाब से. बहुत अच्छी बात है ज़िया साहब. और ये इन जनरल हर मर्ज के लिए कहा जा सकता है कि अगर आपको इफ़ यू डोंट हैव द विल पावर टू एक्चुअली कॉन्कर दैट ऑल्सो, तो वो जो है वो आप की काम नहीं करेगी. कोई दवा भी काम नहीं करेगी अगर आपको उस पर एतकाद ना हो, उस दवा पर या फिर डॉक्टर पर. वो इट ऑल स्टार्ट्स फ्रॉम द इनसाइड. ये आपका कहना बिल्कुल सही है. और इंशाल्लाह जो है वो हम इस पर भी कुछ रोशनी डालना चाहेंगे कि हमारे लिसनर्स आके कुछ इस पर रोशनी डाल सकें. और बहुत बहुत शुक्रिया आपका ज़िया साहब. बहुत दिनों बाद आप से बात हुई. खैरियत से हैं? Okay, I think we lost you. हालांकि पीछे से आवाज़ तो आ रही. Thank you so much for that. Yes, we'll talk about that as well. In fact, there are a few things that we would also like to go ahead and, go over some possible alternative methods for cancer. जो कि हमने पिछली बार आपको जब Wednesday के दिन हमने बात की थी आपसे, we had given you a description basically कि alternative medicine first of all है क्या चीज़, and we had defined some of the main medical systems. These are actual medical systems, believe it or not, and ये इस्तेमाल होते हैं and based on theory and practice ये medical systems होते हैं, alternative medical systems. उसके बारे में हमने कुछ बताया था. थोड़ी सी बात हमने होम्योपैथी के ऊपर भी की थी पिछली बार. Some of these other things also we'll touch upon that. लेकिन आज specifically क्योंकि हम बात कर रहे हैं कैंसर की, तो we'd like to hear from our listeners कि अगर उनकी कोई इस तरह के examples हों या कोई भी helpful चीज़ जैसे कि ज़िया साहब ने कहा, this is something which is known fact कि आप जो हैं if you don't have the willpower, if you don't want to live, अगर आप कोई चीज़ अंदर से खुद नहीं करना चाह रहे, तो वो चाहे जितनी भी आप external force इस्तेमाल कर लें वो चीज़ नहीं होगी. Nothing can work, no drugs can work on you, no other therapy can work on you unless you want to work on it yourself from within. ऐसी कोई चीज़ अगर आप शेयर करना चाहते हो हमारे लिसनर्स के साथ, तो you're welcome to do that at 972-501-9390. और आगे बढ़ने से पहले हम कुछ और आप से कहना चाहेंगे और प्ले करना चाहेंगे कुछ आपके लिए राधा. और ऐसा करते हैं कि ये प्ले करते हैं ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए. चलें, ऐसा 2 सेकंड दीजिए हमको, अभी प्ले कर देते हैं.
Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Nausheen. Happy birthday to you. नौशीन, तुमको सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो. हमारी बहुत ही प्यारी नौशीन जावेद, जो कि हमें सुनती हैं पाकिस्तान से और बोल के लब आज़ाद हैं तेरे की बहुत पुरानी लिसनर हैं, 4.5 साल से सुन रही हैं. एंड आज जो है उनका जन्मदिन है, उनकी सालगिरह है, तो बहुत बहुत मुबारक हो. एंड मे अल्लाह ब्लेस यू विद अ लॉन्ग हेल्दी हैप्पी लाइफ एंड यू नो full of prosperity, joy and health and happiness, which is primary. बहुत बहुत मुबारक हो. ये मुबारक दिन आपकी ज़िंदगी में बार बार आए. यस, ये है हमारी दुआ आपके लिए. और नौशीन, जो कि आपको पता है सपोर्टर हैं, यस, नंबर 1 लिसनर, नंबर 1 सपोर्टर ऑफ रेडियो आज़ाद. November 2nd इज़ हर बर्थडे. आज के दिन होती है, तो वी वॉन्ट टू विश नौशीन अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे. और नौशीन, तुमको पता है ये जो गाना, ये हमने कोशिश की थी स्टाइल मैरिलिन मोनरो के स्टाइल में गाने की, और बहुत कम लोगों को ये नसीब हुआ है. अगर मैंने मैरिलिन मोनरो की आवाज़ में किसी के लिए गाना गाया है हैप्पी बर्थडे का, उसका मतलब है वो बहुत स्पेशल है. तो जनाबे वाला, आप भी हमारे लिए बहुत ही स्पेशल हो, और आपके लिए हम ये भी गाना लगाना चाहेंगे अपनी आवाज़ में. तो हमने आपको हैप्पी बर्थडे सुना दिया. चलें जी, अब सुनाते हैं आपको रफ़ी साहब की आवाज़ में. हम भी अगर बच्चे होते, हम भी अगर बच्चे होते, नाम हमारा होता गबलू बबलू, खाने को मिलते लड्डू, और दुनिया कहती हैप्पी बर्थडे टू यू. हम भी अगर बच्चे होते, हम भी अगर बच्चे होते, नाम हमारा होता गबलू बबलू, खाने को मिलते लड्डू, और दुनिया कहती हैप्पी बर्थडे टू यू. हैप्पी बर्थडे टू यू. कोई लाता गुड़िया मोटर रेल, तो कोई लाता फिरकी लट्टू, कोई चाबी का टट्टू, और दुनिया कहती हैप्पी बर्थडे टू यू. विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे नौशीन. और हम चलते हैं एक छोटी सी ब्रेक की तरफ. ब्रेक के बाद आके विल टॉक सम मोर अबाउट द ऑल्टरनेटिव मेथड्स यूज्ड फॉर कैंसर, और बात करेंगे आपसे हम, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद. वर्ल्ड वाइड वेब पे आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद, आपकी आवाज. It's time to invite the Colonel home, offering you the very best catering services in Indian, Pakistani, Chinese and Mediterranean. Colonel Kebab's Factory, taking care of your pockets and palates. थक गए होंगे आप भी वही पुराने रेस्टोरेंट से केटरिंग करवा के. अरे साहब, कोई और ऑप्शन भी तो होना चाहिए ना. एक ही जगह पे मिलेगा आपको चिकन चरगा, निहारी और बिहारी कबाब. वही आपको मिलेगा शवरमा, फलाफल और चिल्लो कबाब. बाकी भी हर चीज लाजवाब. ट्राई करके तो देखिए जनाब. कर्नल कबाब्स फैक्ट्री. Order by tray or per head. Call 972-705-9595 or visit kebabsfactory.com. KABABZ factory.com. कप्तान, रनर चाहिए, भागा नहीं जाएगा. अरे तेरी जो हालत है, लगता है पेस मेकर इंसर्शन की जरूरत है तुझे. तो मैच खत्म होते ही कॉल करना कार्डियोवास्कुलर क्लिनिक ऑफ नॉर्थ टेक्सास को. नंबर लो 940-384-9000. If you would like to deal with honest individuals and thorough professionals, Radio Azad is where you need to advertise. We have some great advertising packages for you, and we will customize to your business. For more information, please visit us at radioazad.us or call us at 469-358-2321. Trust Radio Azad, because your growth means our success. तलहा बुक्स एंड गिफ्ट, जहां पर आपको मिलेंगी जानमाज़ें, तस्बीह, इतर, अंगूठियां, हिजाब, अबाए, रिलीजियस वॉल हैंगिंग, कारपेट, पेंटिंग्स एंड वॉल क्लॉक्स.
आजान फ्लॉक्सी, कुरान की सीडीज और डीवीडीज उर्दू और अंग्रेजी तर्जुमे के साथ, अहादीस की किताबें, बच्चों के लिए दुआ की किताबें, कुरान चैलेंज गेम्स, मदीना सलात पंगामा उर्दू और अंग्रेजी तर्जुमे के साथ। रेडियो आजाद मेंशन करने पर आपको मिलेगा 20 से 25% तक का डिस्काउंट। कॉल कीजिए आरिफुद्दीन साहब को at 469-877-9898। That's 469-877-9898। Talha Books and Gifts, located है at the intersection of North Star and Renner Road in Richardson. जाए वही बात तो दुहाई है दुहाई भाई। और ये म्यूजिक दिल चाहता है आपको कि पूरा सुने। फ्रॉम द मूवी जूल थीफ। आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद पर अपनी मेजबान अरूज सईद को इन आर उड़न खटोला। सुबह 10 बजे तक रहेंगे आपके साथ। स्टूडियो का नंबर 9725019390 है। यहाँ पर कॉलर, पहले इनसे बात करते हैं और फिर कुछ और कहेंगे आपसे। जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इस वक्त यहाँ पे तो दिन हो रहा है लेकिन पाकिस्तान में रात हो रही है। तो कैन आई जस्ट डू अ स्मॉल डेडिकेशन, अगर 2 लाइन की अगर आप? ऑफ कोर्स बिल्कुल। नौशीन जी के लिए है, वो है गाना ना, है मुबारक आज का दिन, रात है ये सोनी। गाना गाओगे आप? नहीं, मैं नहीं गाऊंगी। मैं गाऊंगी तो आपके सब लिसनर अपना रेडियो बंद कर देंगे। अच्छा, मैंने सोचा शायद आप खुद गाना चाहोगे। डेडिकेशन अगर 2 लाइन की लगा दे गाना, है मुबारक आज का दिन, रात आई है सुहानी, और नौशीन। बिल्कुल है मुबारक आज का दिन। अभी लगाते हैं आपके लिए। सुना हमारा प्रोग्राम आपने, मालूमाती प्रोग्राम? जी, मैंने एक्चुअली हैप से शुरू किया, लेकिन जितना भी सुना है बस नाइस। थैंक यू फॉर ऑल योर हार्ड वर्क एंड एफर्ट। Thank you very much for that, अर्जुमंद। और yes, like I had said, ये शुरू में आज हमने ज़रा जल्दी शुरू कर दिया। डॉक्टर साहब का वही अवेलेबल टाइम था, and we are so grateful that he gave us some time out of his very, very busy schedule to come and explain to us कि what possibly can cause cancer, possible causes उन्होंने हमें बताए। और we'll go over that also, but पहले डेडिकेशन ऐसा करते हैं, डेडिकेशन प्ले करते हैं, and then फिर आते हैं आपके पास। मुबारक आज का दिन, रात आई है सुहानी, शादमानी ओ शादमानी, शादमानी ओ शादमानी। है मुबारक आज का दिन, रात आई है सुहानी, शादमानी ओ शादमानी, शादमानी ओ शादमानी। नशा ऐसा चढ़ा पूछो न यारो, मैं हूँ आसमां पे मुझे नीचे उतारो। आज तो नशा ऐसा चढ़ा पूछो न यारो, मैं हूँ आसमां पे मुझे नीचे उतारो। मुझ पे सदा हंसती रहो यूं ही बहारो,
मिलके मेरे साथ नाचो आपकी है मेहरबानी शादमानी ओ शादमानी शादमानी ओ शादमानी शादमानी ओ शादमानी शादमानी ओ शादमानी। और वाकई ये बड़ा मुबारक दिन है आज एंड यस ये डेडिकेशन थी नौशीन के लिए अर्जुमंद की तरफ से। थैंक यू सो मच फॉर दैट अर्जुमंद। और यस आज भी बड़ा मुबारक दिन है और कल भी बड़ा मुबारक दिन था जबकि लौट के आए थे फैसल कुरैशी साहब यहाँ पर हमारे स्टूडियोज़ में। हमने और तस्वीरें खींची, दिल नहीं भरता तस्वीरें खींच के हमारा। यस सर वो भी लगा देंगे आपके लिए, लेकिन आपको हम बताएं यस फेसबुक पर अगर आप अभी जाएं तो हमारी जो कि एग्जीबिशन की तस्वीरें हैं जाज एंड फैसल एग्जीबिशन की वो लग चुकी हैं जी हमारे रेडियो साथ फेसबुक पेज पर, तो वो देख सकते हैं आप जाके। द पिक्चर्स from the exhibition are there on our Facebook page to view। और उसी के साथ साथ हम आपको बताएं हमारे आज की प्रोग्रामिंग का great programs lined up for you today। 8 से 10 बजे हम होते हैं आपके साथ उड़न खटोले पे सवार एंड उसके बाद आती हैं जी 3 देवियां आयशा बीना एंड शैला। आज क्योंकि वेंसडे का दिन है तो तीनों देवियां मौजूद होंगी यहाँ पर और शैला जी आपके साथ सजाने की बातें करेंगी। आइडियाज टू सेव स्पेस इज व्हाट शी इज गोइंग टू बी टॉकिंग अबाउट। उसके बाद आते हैं दौलत इकबाल साहब 11 से 1 बजे विद मोहब्बतें। 1 से 3 बजे सुहाना सफ़र विद रमेश जी। 3 से 6 बजे बोल के लब आज़ाद हैं तेरे विद आज़ाद। आज का टॉपिक व्हाट थिंग्स डू यू टेक इनटू कंसिडरेशन फॉर मैरिज। इंटरेस्टिंग टॉपिक सुनना मत भूलिएगा। 3 से 6 बजे बोल के लब आज़ाद हैं तेरे। एंड देन 6 to 8 आज दिल दिल पाकिस्तान होगा जी विद अनवर खान साहब। दिल दिल पाकिस्तान विद अनवर खान साहब होंगे यहाँ पर 6 to 8 विद यू एंड ये होंगे जी आज शाम के लिए। शादमानी ओ शादमानी शादमानी ओ शादमानी। आज का दिन रात आई है सुहानी शादमानी ओ शादमानी शादमानी ओ शादमानी। Let me also tell you about Ocean Pearl Rice. Pick up a bag of the most aromatic and flavorful basmati rice. Ocean Pearl Rice आपको मिल रहा है 699 का for a 10-pound bag. Yes, an unbelievable offer. And regular price आपको पता है 10 pound की बैग की होती है 11.99 या फिर 12.99. आपको जी मिल रहे हैं for $7 and ये आपको मिलेगा अपने करीबी देसी ग्रोसरी स्टोर से। और if they do not carry it, you can always ask them to call the wholesalers जो कि है फहमान एंटरप्राइजेस to bring that rice to you because सस्ता चावल है और बहुत बेहतरीन चावल है, बहुत ही उम्दा चावल है। तो ये आप ज़रूर लीजिएगा ओशन पर्ल सुपर बासमती राइस जो कि आपको इनके होलसेलर से मिल जाएगा। फहमान एंटरप्राइजेस का नंबर 214-597-5133 214-597-5133। शादमानी ओ शादमानी शादमानी ओ शादमानी। है मुबारक आज का दिन रात आई है सुहानी शादमानी ओ शादमानी शादमानी ओ शादमानी। खुशियों की झड़ी बांधी तेरे सहरे में आशा
शादमानी ओ शादमानी, शादमानी ओ शादमानी। और जनाब वाला आप सुन रहे हैं यस खुशी का दिन है और आज हमें बहुत खुशी हुई। सुबह सुबह हमने बात की डॉक्टर अहमद से, जिनसे हमने पूछा कि व्हाट कैंसर इज। ही एक्सप्लेन्ड इट इन लेमन टर्म्स, कैंसर क्या है एंड व्हाट आर द लीडिंग फैक्टर्स ऑफ कैंसर दैट कॉज कैंसर। एंड ये बात जो थी वो सामने आई, हाईलाइटेड दिस द मोस्ट आई थिंक दैट अबाउट 60% ऑफ कैंसर केसेस जो कि लोगों को कैंसर होता है आर ड्यू टू द लीडिंग बिहेवियरल एंड डाइटरी रिस्क, यानी कि उनका अगर हाई बॉडी मास इंडेक्स हो और उनकी जो फ्रूट एंड वेजिटेबल कंजम्पशन हो वो कम हो, या फिर लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी हो, टबैको यूज हो, अल्कोहल यूज हो, ये सारी चीजें डाइटरी एंड लाइफस्टाइल जो कि methods हम इस्तेमाल करते हैं. I mean, the kind of lifestyle choices that we have, especially dietary choices that we have, they play a they have a major influence on us, contracting something like that. एक मूजी मर्ज एक बीमारी जो कि कैंसर है, and very very common of course, second leading cause of death in the world right now, heart disease being the number one leading cause. और दूसरी चीज उन्होंने बताई कि it all starts with the immune system, strengthening the immune system. तो ऐसी कौन सी चीज़ें अगली बार जब हम आएंगे next time Wednesday हमारे health and beauty में, we'll talk about things that help strengthen the immune system, help boost the immune system, because it really is अगर आप देखें अपनी your जितनी भी आपकी बीमारियां होती हैं, the core really lies in the immune system. चाहे आपकी वो seasonal allergies हों, चाहे वो something minor to something pretty major like cancer can also be caused because of the kind of immune system you have. A weak low immune system अगर आपका होता है तो दिस कैन कॉज आपके लिए बहुत बहुत हानिकारक साबित हो सकता है और होता है. तो विल टॉक अबाउट दैट द नेक्स्ट टाइम. इस बार हम कोशिश कर रहे हैं, आपको हमने जो है ना वो काफ़ी मालूमात दी. आई वुड लाइक टू हियर सम लाइव एग्जाम्पल्स, जैसे कि लास्ट टाइम आई हैड एक्चुअली had heard this from somebody that their mother had breast cancer, or she refused to take chemotherapy. उन्होंने कहा मैं ये बिकॉज she understood कि उसके बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, और आप सिर्फ आपको जाके रिसर्च करने की मतलब आपको तकलीफ करनी पड़ेगी कि यू जस्ट गो ऑन, बिकॉज there's too much information out there, so there's not possibly any way that we can actually give you all of that information here, so you have to do your own research. So this person's mother, she refused chemotherapy, और वो जो है she was अच्छी खासी उम्र की थी वो, she was I think she was in her 50s at the time that she got breast cancer, and she lived for about 17-18 years with that breast cancer, and even though it had spread, even though it had spread, she still lived for that. और केसेस मैंने अपनी आँखों से देखा है. बच्ची थी कुवैत में, हमारे सामने की बच्ची, she was 16 years old. She had blood cancer, and of course, what, I am not, again, disclaimer, I am not a doctor, this is not a medical show, lekin of course we had a doctor on the show today, so and I am not slamming conventional medicine, I don't want anybody to get that impression, but there are other ways than conventional medicine also, and जब हमने इतना देखा है कि उसमें of course फ़ायदा तो होता है, फ़ायदा होता है, इसीलिए तो हम वो चीज़ इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसमें बहुत नुकसानात भी हैं. हाल और on the other hand, नेचुरल जो कि अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट्स आप इस्तेमाल करते हैं, उसमें कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, उसमें कोई हार्मफुल इफेक्ट्स नहीं है. अगर आपको वो चीज़, वो मेडिसिन अगर रास नहीं, अगर लगे नहीं, तो कम से कम उसका नुकसान तो नहीं होगा. तो देयर इज नो हार्म इन एक्चुअली ट्राइंग दोज आउट एज वेल. एंड आप कन्वेंशनल भी इस्तेमाल करें, उसके साथ ही साथ टू कॉम्प्लीमेंट इट यू कैन ऑल्सो यूज सम अल्टरनेटिव मेथड्स एज वेल. ये बच्ची 16 years old, got blood cancer, कीमोथेरेपी उसकी एक दफ़ा नहीं 2 दफ़ा हुई. 1.5 साल में उस बच्ची की मौत हो गई.
And Allahu alam, it's just, you know, I mean, something that I've seen, so I'm relating it to you. खुदा जानता है बेहतर है कि you know अगर उसकी ना होती, of course जिंदगी, हमारा तो ये ईमान है कि जिंदगी इतनी ही थी, but again you know, this is something, these are live examples and they are in front of us. So before, you know, हमें अपने सारे options जो हैं वो, I think we should be able to explore all of those options, especially where, you know, medicine is concerned. Medical, हमारी आपकी कोई condition develop इस तरह की हो जाती है तो it is you know, आपके फ़ायदे में है कि आप conventional medicine भी, उसके भी देखें methods कि क्या इस्तेमाल होते हैं, लेकिन alternative methods भी आप ज़रूर explore करें. This is what the maqsad of this show is, for the lack of a better word. और एक वेबसाइट के बारे में हम आपको बताना चाहेंगे. दिस वी हैड मेंशन्ड अर्लियर ऑन आल्सो इन आवर अदर शोज. एशियन ब्रेस्ट हेल्थ आउटरीच एक प्रोग्राम है जो कि यू नो गिव्स वुमेन विद ब्रेस्ट कैंसर ऑफ एशियन ओरिजिन अगर आप हैं तो ये, एंड अदर आल्सो आई एम श्योर दे हेल्प एवरीबडी, बट स्पेसिफिकली दे वुड लाइक टू, दे आर रीचिंग आउट. दे वर मोस्टली फॉर फार ईस्टर्न वुमेन अभी तक, लेकिन नाउ दे आर रीचिंग आउट टू वुमेन of Indian, Pakistani, Bangladeshi, Sri Lankan origin, also subcontinent. Say they would like to reach out, and women that don't have enough insurance, या under insured हैं, या फिर कोई insurance नहीं है, और उनको जो है वो excuse me, not cancer, these are mammograms that they have, so you don't even have to, you know, have that. अगर आपने कभी अपनी, you know, जिंदगी में mammogram नहीं कराया है, first of all, after 30 they recommend that you should have a mammogram at least once a year. So you know, and we had, when we talked about breast cancer, we went over some you know, techniques that you can also अपने खुद से भी आप कर सकते हैं, methods that you can see, you know, detect for yourself also. And also this is something which is available to women. अगर आपके पास इंश्योरेंस कम है या फिर नहीं है इंश्योरेंस, मैमोग्राम्स आपके वो बिल्कुल फ्री करते हैं आपके लिए. दिस इज एशियन ब्रेस्ट हेल्थ आउटरीच, एंड इनकी वेबसाइट है asianbreasthealth.org, asianbreasthealth.org, and it's just, you know, preventative. And you know, ये मेरे ख्याल से हमारे खालू हैं, वो कहते हैं, you know, वो अंदर की बीमारी जो है, अंदर की चीज़ जो है वो अंदर ही रहनी चाहिए. I don't agree with that. I mean, you know, खुदा ना खास्ता अगर आपको कोई, you know, ऐसी चीज़ हो तो you should actually know that you have that in order to, you know, go ahead and अपने आप उसका इलाज करवाएं. तो अंदर की चीज़ को अंदर ना रहने दें आप. You know, you should check it out. You should check it out. इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर होगा तो आपको in a timely manner पता चल जाएगा, and you are going to be able to cure that, you know, and live, inshallah, a healthier life.
चलिए एक छोटी सी ब्रेक लेके आते हैं आपके पास और फिर we'll wrap up this show. Hey, I need some jewelry for a party at work. What do you suggest? Hey, try Milani Jewelers. How about diamond jewelry? Milani Jewelers carries certified diamonds and also give appraisals for your diamond sets. But what about jewelry for men and kids? Milani Jewelers. But what about for my wedding? Yes, Milani Jewelers. For you, for me, for anyone, for any style or any occasion. Precious and semi-precious gemstones, designer antique sets, diamond Victorian jewelry, all in 22-karat gold. Milani Jewelers sales associates understand your needs and style. That means you get what you want without any imposition, and their gift items start from just $50. And they even carry watches. Located at 318 South Central Expressway, Richardson, or call 972-234-GOLD. Milani Jewelers, where trust and services means everything. सुनो, हमारी शादी होने वाली है, तुम खुश हो ना? हाँ, खुश तो हूँ, मगर और भी खुश होती अगर हमारी शादी का फंक्शन किसी अच्छी जगह पर होता। वो ही पुराना गंदा सा हॉल बुक करवाया है मम्मी ने। मेरी जान, मुझे मालूम था तुम यही कहोगी, इसीलिए तो मैंने घर वालों से कहकर शादी का रिसेप्शन हॉलीडे इन में रखा है। और बाहर से आने वाले मेहमानों के लिए अटलांटिक होटल्स ग्रुप वालों ने खास रियायत दी है। पार्टी के लिए उनका बैंक्वेट हॉल और रिहाइश के लिए स्टे ब्रिज स्वीट्स। मैं कितनी खुश नसीब हूँ कि मुझे आप जैसा जीवन साथी मिला। Presenting Atlantic Hotels Group. For more information on their upscale holiday inn, call 972-404-4500. For Staybridge Suite, call 972-401-4700 or visit atlantichotelsgroup.com. Imagine your child on a journey of self-discovery. Like the one taken by millions worldwide at Kumon Math and Reading Centers, where instructors use a proven method to unlock your child's full potential. Imagine your child accomplishing more each day than the day before. With Kumon, his successes are frequent and rewarding, so he's motivated time and again to seek out the next challenge. Imagine your child reaching heights no one ever thought possible. Because she's gained the skills and confidence to achieve more on her own. For over 50 years, Kumon instructors have helped children discover their own boundless possibilities. Imagine that. Let Kumon Math and Reading help unlock your child's potential so he can be truly amazing. For more information, please contact Trish at 817-707-7323 or email cumonofsouthlake@yahoo.com or cumonofcolligo@yahoo.com. Hi, this is Kimberly Kinzer, a full-service immigration attorney. I handle green cards for family members and employees, fiancé visas, investors visas, employment visas, Violence Against Women's Act petitions, deportation defense, asylum, citizenship, including waivers for the English and history exams. My law firm is also experienced in handling complicated cases and cases pending too long, and most importantly, federal litigation. In the hour of need, do remember Kinzer Law Office in Richardson. For more information, please visit kinzerlaw.com or call 972-491-1145. That's 972-491-1145. If you or a loved one is suffering from cancer, please don't despair, because help is available at Cancer Center Associates. Great professionals at work providing you the latest technology services including radiation therapy, chemotherapy, PET scan and diagnostic imaging. They also treat all kind of blood disorders like anemia and thalassemia. Very conveniently located at 3 different locations in Mesquite, McKinney and Carrollton. For more information, please call 214-905-1300. That's 214-905-1300 or visit cancercenterassociates.com. Keep hope alive with Cancer Center Associates. सुन रहे हैं आप रेडियो आजाद, द वॉइस ऑफ द पीपल।
9725019390 हमारे स्टूडियो का नंबर. Kumon, the world's largest after-school math and reading enrichment program, आपको दे रहे हैं $60 value registration fee for absolutely free. Waiving the registration fee for Radio Azad listeners. Kumon देते हैं आपके बच्चों को abilities to gain the confidence and motivation to learn, accomplish and achieve more on their own through school and beyond. Kumon of South Lake and Colleyville, जो कि हमारे एरिया में है, we are very fortunate to have them in our area, have been ranked as top 6 nationwide and number 1 and 2 in the Dallas-Fort Worth area for quality of instruction. अगर आप भेजना चाहें अपने बच्चे को मैथ्स या रीडिंग ट्यूटरिंग के लिए तो Kumon is your best choice. कॉल कीजिए ट्रिश को for more information at 817-707-7323 817-707-7323 or email kumonofsouthlake@yahoo.com or kumonofcolleyville@yahoo.com. The Muslim Student Association at SMU is holding its annual Fastathon. Kal, November 3rd ko, people from all backgrounds and religions can sign a pledge form to raise donations from corporate sponsors. Or this year proceeds will go to Islamic Relief, 1-to-1 orphan sponsorship. और कल होगा जी November 3rd को at 6:30 p.m. and this is a free banquet at the Radisson Hotel, Dallas. Keynote speaker is Rashad Hussain, the White House Special Envoy to OIC. Information के लिए आप कॉल कर सकते हैं खुर्रम तौफीक साहब को at 214-724-7673 214-724-7673. And this weekend, the first South Asia Peace Conference taking place at the University of North Texas in Denton. 5th and 6th November ko hogi. This conference is open to the public and absolutely free. और यहाँ पर होंगे distinguished speakers, Ambassador of Pakistan, Ambassador of Afghanistan, renowned peace activist and many others. The aim of this conference is to provide a platform for leaders, diplomats, researchers and institutions in promoting peace and communal harmony in South Asia, जिसकी अशद ज़रूरत है. और जा सकते हैं आप November 5th and 6th को at UNT in Denton. Information के लिए Dr. Qaisar Abbas को कॉल कीजिए 940-565-5945 940-565-5945. And wrapping up this program, we'd like for you to know that earlier on we had Dr. Sayyad Ahmed speaking with us, जिन्होंने बताया हमको कि कैंसर आखिर क्या चीज़ है और causes of cancer, possible causes of cancer क्या होते हैं. And of course that figure that he gave, 60% of cancer can be caused due to poor choices in diet and lifestyle. And immune system, he said, was key. A healthy immune system is key to actually any prevention of any disease, and especially of cancer as well. फिर उन्होंने बताया हमको कि कीमोथेरेपी क्या होती है, उसके बेनिफिट्स और उसके रिस्क्स भी एनालाइज किए उन्होंने, रेडिएशन के बेनिफिट्स एंड रिस्क्स भी. फिर हमने उनसे पूछा कि ये जो सर्जिकल रिमूवल होता है ऑफ एन ऑर्गन और ट्यूमर, कैन दैट समटाइम्स टेक केयर ऑफ द कैंसर? द आंसर वाज नो. समटाइम्स रिमूविंग एन ऑर्गन, जैसे कि अगर आपको फॉर एग्जांपल कोलन कैंसर हो या ब्रेस्ट कैंसर हो, ये बहुत कॉमन देखने को मिला है हमको कि एक ब्रेस्ट रिमूव कर दिया, द कैंसर स्टिल रिमेन्स, दूसरा रिमूव कर दिया, द कैंसर स्टिल रिमेन्स. सो दैट इज समटाइम्स नॉट द सोल्यूशन. सो यू नो, ऑफ कोर्स वो आपको, you have to assess the risks in that as well if you are thinking of surgery and an actual removal of an organ या फिर tumor if you know, खुदा ना खास्ता आपको है cancer.
And then, of course, he spoke about some alternative methods that are used for cancer. And this is, again, methods. We will not use cure or treatment. And लेकिन इसके ऊपर जो है ना सिर्फ रिसर्च नहीं, इसके ऊपर बहुत you have seen. I mean, alternative medicine के साथ यही होता है कि the conventional side will always say that there is not enough proof. लेकिन proof आपको मिलेगा in living beings, in human beings, in people. You can see live examples कि इनके ऊपर एक certain, remedy काम की है, alternative remedy काम की है, तो उसको try करने में क्या है, especially if it doesn't have any side effects. तो उसकी बात की डॉक्टर साहब ने, और झटपट एक कॉलर लेते हैं, and then बहुत कम टाइम बचा है. We're going to say goodbye to you in just a few short minutes, but first let's take a caller. जी, good morning. गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. आजम साहब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक है. डॉक्टर साहब ने बड़ा अच्छा आपका प्रोग्राम सुना, बड़ा अच्छा उन्होंने इंफॉर्मेशन शेयर दी, और मैं काफी केसेस जानता हूँ लोकल मेट्रोप्लेक्स में हैं जो इस तरह के केसेस से गुजर रहे हैं और हैं. तो आपका भी इंफॉर्मेशन जो आप दे रही हैं बहुत अच्छी दी है, बहुत अच्छा प्रोग्राम है. बस इसीलिए मैंने कॉल किया. थैंक यू सो मच. बहुत बहुत शुक्रिया आप आजम साहब, आपकी योर सपोर्ट का, आपकी इंकरेजमेंट का मीन्स द वर्ल्ड टू अस. थैंक यू सो मच सर. बात ये जानने में आई कि people with cancer are interested in trying anything really, because that may help them, including of course complementary alternative cancer treatments methods जैसे कि हम आज उनको कह रहे हैं. So if you can have a little bit of control over your situation, over your disease using this alternative medicine, हमारा कहने का मकसद ये है कि उसमें कोई हर्ज नहीं है. अगर आपका जो कंडीशन है वो ट्रीट ना हो तो इट इज डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू कोप विद द साइंस एंड द सिम्टम्स, जो कि आपके सिम्टम्स हैं जो कि कैंसर से हो जाते हैं. A lot of time, people go through a lot of anxiety, of course, which is natural. And then there is fatigue, nausea, vomiting, pain hoti hai, sleep problems ho jate hain, stress hoti hai. So, to relieve all of this also, of course, alternative medicine, alternative treatments jo hain, wo bahut kaam aate hain. How important is diet and lifestyle? I asked Dr. Saab, जहाँ पर cancer की बात आती है, तो how important really is diet and lifestyle? Extremely important. He went over some common foods that help prevent cancer, जिसमें कि vegetables के नाम जो थे वो पेश थे. स्पेशली कॉलीफ्लावर, कैबेज, केल जैसे वेजिटेबल्स का उन्होंने नाम लिया. एंड यस, ही स्पेसिफिकली सेड सम ऑफ देम हैव कंपाउंड्स दैट कैन आल्सो समटाइम्स बी स्ट्रॉन्गर देन कीमोथेरेपी ड्रग्स. So preventative तो है ही, of course they are preventative, but once somebody is suffering from that disease, ये लेना भी बहुत ज़रूरी है to alleviate some of those symptoms that you are suffering in cancer. And of course, yes, the antioxidants, full of antioxidants foods जैसे कि berries हैं और green tea and turmeric. मैं आपको बताऊं, जितनी भी बात हम करें टर्मरिक के बारे में वो कम है, इसकी अच्छाई बयान करें. It is a wonderful spice, and inshallah next time when we come and talk about the strengthening the immune system, we'll talk some about about turmeric. This little spice that we have been using, especially in our cooking for years and years, has these miracle cures. It's amazing. जी हाँ, हल्दी का दूध पिया कीजिए. Some herbs that he went over which help prevent cancer. And
Yes, lots and lots of steps that we can take in order to reduce the risk of cancer, minimize the risk of cancer. All of that had to do with controllable factors हमारे जो के होते हैं, जो कि हमारी diet and lifestyle से related हैं. And usage of things like plastic, especially in microwaves, is highly discouraged. ये जो बोतलें आप छोड़ जाते हैं, देखिए ये मैं why I had asked the specific question because this is very common. Every one of us has some time or another left a bottle of water in our cars. प्लास्टिक की बोतल हम छोड़ जाते हैं, फिर उसके बाद जब वापस आते हैं हम 1-2 घंटे बाद, वो मेल्ट हुई हुई होती है, कुजड़ी मुजड़ी होती है ड्यू टू द हीट दैट जो गाड़ी में आप छोड़ जाते हैं, गर्मी का मौसम है, तो वो जो चीज है वो दोज प्लास्टिक के उसकी जो होते हैं कंपोनेंट्स, वो उसमें लीक करते हैं पानी के अंदर, एंड दैट इज वेरी वेरी हार्मफुल टू ऑल ऑफ अस. I have been guilty of doing that, so I will correct myself first and then ask you to please not do that either. And that pretty much wraps it up for us folks. And ये program अगर आपने नहीं सुना, the initial hour was very very informative. Dr. Ahmed के साथ हमने बात की, तो repeat program आप ये दोबारा से सुन सकते हैं. 8 बजे आज शाम दोबारा relate होगा ये program, rebroadcast होगा, and that is going to be 8 PM Central Standard Time. और उससे पहले की भी प्रोग्रामिंग सुनते रहिएगा. आज ग्रेट लाइनअप ऑफ प्रोग्राम्स, एंड यस 6 to 8 आज होंगे अनवर खान साहब विद दिल दिल पाकिस्तान. For your comments and feedback, you can write to us at shows@radioazad.us. shows@radioazad.us. Or you can leave us a comment on our Facebook page. फेसबुक पर हमारी अपडेट्स रिसीव करने के लिए आपको टेक्स्ट भेजना है 40404 पर 40404. द बॉडी ऑफ द टेक्स्ट विल से फॉलो रेडियो आजाद. तो सारी की सारी अपडेट्स आपको मिल जाया करेंगी, जैसे कि दोज पिक्चर्स फ्रॉम द एग्जीबिशन एजाज एंड फैसल. यस, दोज आर अप. उम्मीद करती हूँ कि ये प्रोग्राम हेल्पफुल रहा होगा हम सब के लिए, एंड बहुत बहुत शुक्रिया सुनने का. और अगली आवाज़ें आप सुनेंगे शैला, आयशा और बीना की. स्टे ट्यून्ड फॉर कॉफ़ी मॉर्निंग्स विद द 3 देवियाँ. मुझे दीजिए इजाज़त. कल आएंगे आपके पास उड़न खटोले पे सवार, और यस, उड़न खटोले पे सवार लेके आपको भी चलेंगे, घूमते रह जाओगे मैं किसी और देश में भेस बदल के. टिल देन, दिस इज़ योर मेज़बान उरूज सईद सेइंग टेक केयर एंड खुदा हाफिज़. वर्ल्ड वाइड वेब पे आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद, आपकी आवाज. सोना हीरे मोती से वर, सुंदरता के सारे सपने देखे सोचे थे जो हमने, पूरे हुए हैं लम्हों में. बाईस कैरेट सोना, डायमंड्स, जेमस्टोन्स ज्वेलरी आपकी खिदमत में. मलानी Jewelers. 318 South Central Expressway, Richardson, Texas. For details, call 972-234-4653 or visit www.malanijewelers.com. मम्मी, मुझे जायरो खाना है. कोई जरूरत नहीं है, हलाल जायरो कहीं नहीं मिलता. मिलता है, चिली पेपर में सब हलाल ज़बीहा मिलता है. All kinds of sandwiches, pizzas, burgers, chicken wings और डैलस की बेस्ट बिरयानी आपके लिए. लेकिन स्प्रिंग वैली और ग्रीनविल पर कौन जाएगा इतनी दूर?
अरे माँ, अर्विंग में मिकासर और वैली रंच पर भी एक ब्रांच है जिसके साथ मीट शॉप भी है, ऑर्गेनिक और नेचुरल मीट, चिकन, लैम, बीफ, गोट और स्टेक मीट के लिए। तो ये अर्विंग में है। फोन नंबर क्या आएगा? 972-444-8866 और रिचर्डसन में 972-480-8998. Hey, I need some jewelry for a party. शादी से पहले तुमने कितने वादे किए थे? कहा था तुम्हें इतना टाइम दूंगा, उतना टाइम दूंगा, कि तुम बात करते करते थक जाओगी और अब शादी के बाद नो टॉक टाइम, झूठे कहीं के। So log on to rollandbold.com, एक पिनलेस डायलिंग सर्विस जो अपने वादे निभाना जानते हैं। तभी तो इंडिया के लिए कॉल करो 1 सेंट में, पाकिस्तान के लिए 3.9 सेंट और बांग्लादेश के लिए 3.5 सेंट। So log on to rollandbold.com, हर मिनट का वादा पक्का। Imagine your child on a journey of self-discovery. Like the one taken by millions worldwide at Kumon Math and Reading Centers, where instructors use a